Welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with last part of Indian Contract Act, Special Contracts. Special Contracts ভিতরে আমি দেখিছো চারটা জিনিস হলা on the whole it's five things but se classify করছে চারটা জিনিস को কোন কোন ଆମର indemnity, guarantee, bailment, pledge হলা এজা সব কম্বাইনিংলি আমি লস অফ এজেন্সি কହୁଛୁ but agency is a on total different chapter ঠিক আছে তো আমি দেখিয়া contract of indemnity and guarantee clear indemnity and guarantee को section number होची section number 124 and 125 है contract of indemnity section number 124 and 125 and other provision गुडा contract of guarantee सहित deal करछन तो contract of indemnity रो meaning कोन देखो section 124 of the act defines the expression contract of indemnity as a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of any other person. देखो एडी गुटे जिनसे कहूची contract of indemnity. Contract of indemnity. से भितरे कहूची it's a contract of promise. है ना contract of indemnity माने कौन contract of promise. है ना आमे जानचो legal obligation start हेबा पे we need some promise, a person to promise and a person to receive the promise. है ना धीरे जिनसर essentiality एडी अच्छी तो in the whole ये कौन कहूची ना as a contract by which one party promises to save the other एडी को promise होची ना one party promises to save other from loss को प्रकार loss ना loss caused to him by what by से दीटा जा जिंस कहिछि दीटा एलिमेंट कहिछि कोन कोन कहिछि by the conduct of the promiser himself either से promiser जे भी अछि माने जे प्रॉमिस करछि ताको लॉस रो सेव करियली कहि से पर्सन रो निजरो कंडक्ट रो सेव करियो और by the conduct of any other person हैला एडी हमर जो दीटा एलिमेंट आछि सेटा इंपोर्टेंट फर्स्ट थिंग कोन कहिछि कंडक्ट माने कोन act of promiser himself किंबा कौन कहूची अदर थिंग ना the conduct or act of any other person बुझी पालो क्लियर the contract of indemnity भितर हमें कौन करलो इट्स अ contract of promise डायरेक्टली हमो एडा अदर नेम कोन contract of promise सेडा भितर गुटे जिंस आछि कोन ना वन पार्टी जे भी गोटे पार्टी प्रॉमिस करबो सेव फ्रॉम द लॉस आ गोटे पार्टी को प्रॉमिस करियो कि ताको लॉस रो से कोन करियो प्रोटेक्ट करबो किमिति प्रोटेक्ट करबो ना लॉस caused by the conduct of the promiser himself either ता निजरो जदी किछि लॉस हेले से प्रोटेक्ट करबो किबा कोन अदर पर्सन नॉट रिस्पांसिबल विथ द कॉन्ट्रैक्ट माने कॉन्ट्रैक्ट भितरे नथिबा लोक भी जदी किछि भी भूल कला कि लॉस हैला तो से जिंस रो भी कोन से प्रोटेक्ट करबो के प्रॉमिसर तो चारटा जा एलिमेंट क्लियर हम रेडी example देखो A contracts to indemnify B against the consequences of the proceedings which C may take against B in respect of a certain sum of rupees 2 lakhs. This is a contract of indemnity. Indemnify ର meaning कोन ना protect से कोन करियो protection दा ऑफर करिवो हैला protection ऑफर करिवो किमिति से गुटे जिंस कहूछ देखो A contracts to indemnify B माने A is the promiser here B is the promisee here हैला A कोन कहूछ मु तते protect करिवि protect from what the consequences of the proceedings माने the situations arising by suits filed माने कोन जदी किछि पुलिस केस हैला जदी किछि एक्शन होछि ता अगेंस्ट रे से जिंस रो A प्रोटेक्ट करिवो B को which C may take against C होछि कोन other party to the contract which C may take against B in respect of a certain sum of rupees 2 lakh तो ए एंटायर जिंस रा कोन से 2 लाख रुपीस को धरि की होछि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तो मते एडी को प्रॉमिसर होछि A हैला प्रॉमिसी होछि B हैला प्रॉमिसर को हमें एटारे कहू इंडेमनिफायर एथरे कहू कोन इंडेमनिटी होल्डर हमें पढिबा से जिंसटा लेटर पीरियड रे हैला तो आ बाकी एडा जो अछि माने कॉन्ट्रैक्ट और एक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन एडा होछि C क्लियर This contract includes indemnifier and indemnity holder. A person who promises to indemnify from losses is called an indemnifier. माने कोन जे प्रॉमिस करछ से होछि indemnifier
whose loss is made good is called indemnity holder. Clear? Hele एडी कोन parties to indemnity heading दियो parties to indemnity. Person who promises to safeguard जे भी जदि प्रॉमिस करछि सेफगार्ड करिया पई that person is called indemnifier. हैला indemnifier. आउ person whose loss is made good, whose loss is made good ताको हमें कहे कोन indemnity holder. Clear? indemnity holder. बुझि पाला? These are the parties to contract. एबे जतो हमें जानि देलु कि एमानंगर रोल कोन हमें एबे निजे निजे फ्रेम करि पारिया निजे निजे भी भाबी पारिया कि तांकर राइट्स कोन ऑब्लिगेशन कोन सेडा लॉ भी कोन कहउछि सेडा हमें क्रॉस चेक करबा. क्लियर? एबे देखो to indemnify does not merely mean to reimburse in respect of monies paid but to save from the loss in respect of the liability for which the indemnity has been given. से कहउछि कोन सिंपली रीइंबर्समेंट ता केबेले इंडेमनिटी को लीड करिवनी माने फॉर एग्जांपल से पर्सन तते आधा देला हैला आधा देनी तो ये कोन कहउछि ता हिसाब रे ता माने बिहाफ रे ये पैसा दे दोछि तो रीइंबर्समेंट ता केबेले इंडेमनिटी अंडर ट्रीट होबनी हैला भलो पॉइंट एटा देखो रीइंबर्समेंट ता केबे इंडेमनिटी अंडर ट्रीट होबनी बट जिंस कोन आली कहले जदी से पर्सन दा दोनी तो दिस पर्सन शुड हेल्प हिम रिकवर फ्रॉम दैट पर्सन बुझला ताडू रिकवर करि परला ये करियार अछि माने सेफ गुड जिनसटा लॉस को से ठीक करिवार अछि बट कोन रीइंबर्समेंट खाली कर देगी ताडू ये वसूल करियाले नै ताडू वसूल करिके आको आसलाळे देखिबा अछि. क्लियर? तो एटी लेखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी पाखरे mere reimbursement does not amount to indemnity. Mere reimbursement does not amount to indemnity. This is a case law point. CL लिखिए highlight करो. आ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दा एक्सप्रेस भी हे पारियो इम्प्लाइड भी हे पारियो हैला एथरो जो टाइप्स उडागा अछि मे बी एक्सप्रेस or implied. Maybe express or implied. Express or implied contract कोन हम जानथिलु express contract माने it may be expressed through words. Implied माने कोन it is generally implicable by their actions. माने जदि देखो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट भितर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भितर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भितर कोन होची ना पर्सन जे भी अछि से कहउची कि जदि ए पर्सन तते 2 लाख रुपीस ता रिटर्न करूनी देन आई विल हेल्प यू टू हेल्प माने तार जहा भी रिकवर करिया पई बट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बुझो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जहा भी होची इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भितर हमर बहुत किछि टर्म्स एंड कंडीशंस अछि से टर्म्स एंड कंडीशंस भितर से कहउची एदर तते कोन आमे पैसा दबो एदर नले कोन घर जदी अधा कोन हेछि तो आमे हेल्प करियो सेडा ठीक करिया पई कि जहा किछि भी तो से जिंस तते गुटे गुटे करिके एक्सप्लेन करियो नै जदी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस तो साइन करछु तो जहा किछि भी तार इम्प्लिकेबल कंडीशन उडा अछि सब जिंस तो निजे निजे अप्लाई करियार अछि हैला से गुटे गुटे जिंस तते कहनी कि ता माने ने से करियो नै हैला तो एक्सप्रेस माने होची से डायरेक्टली कहियो इम्प्लाइड माने होची तार जहा भी एक्जिस्टिंग कंडीशन गुडा अछि सेटा इम्प्लिकेबल हबो इवन इफ ही इज नॉट एक्सप्रेसिंग इट क्लियरली बुझिला स्लाइड पॉइंट ऑफ डिफरेंस अछि ऑलरेडी डिस्कस्ड पॉइंट बट कहि देले वंस एडा देखो एडा गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट ए जो गोटे माने केस लो गोटे हेइथिला से भितर से कहउची कि ऑलमोस्ट ऑल इंश्योरेंस other than life and personal accident insurance are contract of indemnity
से कहूची ऑल इंश्योरेंस एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ए दीटा जाक केबे हेले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी काउंट होबनी बाकी सब जिंस कोन हमरो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर रे काउंट तो लेखो एडी all insurance contracts all insurance contracts नहीं खाली insurance contracts देखो insurance contracts भितरे life insurance और personal accident insurance हैला लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस जहाँ भी अच्छे सेटा केबे हेले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी काउंट हबनी हैला जेहेतु एटा पूरा एक्सेप्शनल तो एटा रो क्वेश्चन आसे परियो दीडा एलिमेंट अछि मन रयनी से कोछि कोन एई दीडा इंश्योरेंस को छाडी की बाकी सब जेत्ते की भी इंश्योरेंस उडा अछि सब जा कोन हमर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्लियर काहेंगी ए दीडा जिंस को काहेंगी एक्सक्लूड करायला इंडेमनिटी रो के कहि परियो नो बिकॉज आमे पढ़लु गुटे जिंस इंडेमनिटी माने होछि रीइंबर्समेंट नै तू ठीक करि पारे अछि से लॉस टाको आ जदी गुटे पर्सन मरियला गुटे पर्सन रो लाइफ पळेला तो केबेले सेटा ठीक करि पारोगी नै दैट्स व्हाई एडा इंडेमनिटी अंडर रे काउंट हो क्लियर लॉजिक ठीक बोले बुझलो लॉजिकली मन रखियो भूलिबोनी क्लियर देन देखो in National Overseas versus Export Credit Guarantee Corporation of India Limited A 2008 all 18 it was held that where export risk policy issued by Export Credit Guarantee Corporation and exporter had consigned shipments to buyer at his own risk without resorting to the terms of policy the corporation is not liable to indemnify loss caused to the exporter. This is a simple case law discussed here it is important नाइ से कहूची गुटे शिपमेंट अछि जहाँ भी रिस्क माने ताको एसोसिएट हे गया अछि से जिंस जा माने ठीक से डिस्कस हेनी तो जे भी कॉर्पोरेशन अछि ताको लायबिलिटी नाइ से जिंसटा इंडेमनिफाई करिया पे क्लियर तो आमे गुटे जिंस जानलो कोन लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस को छाडी बाकी सब जिंस जा कोन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर आछि but the question is contract of indemnity भितरे whose responsibility and whose scope is limited कार responsibility और कार scope टा limited ए जिंसटा कोन हमको पूरा पूरी जानिबा दरकार एडा पढिया पे हमको कोन पढियार अछि ना राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिटी होल्डर जानिबा दरकार क्लियर then देखो rights of indemnity holder when sued माने कोन when action is taken or arisen ठीक है section 125 provides the right of indemnity holder when sued this section provides that the promise in a contract of indemnity acting within the scope of his authority is entitled to recover from the promisor first thing होची से कोची कोना this section provides that the promise जहा किछि भी प्रॉमिस तांका भितरे अछि इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भितरे हेतिबा प्रॉमिस ता एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी बुझला प्रोवाइडेड तार अथॉरिटी को कोन से केबे एक्सीड करिनी कि अथॉरिटी को बियॉन्ड से केबे बिहेव करिनी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रॉमिसर अच्छा इंडेमनिटी होल्डर माने जे प्रॉमिस रिसीव करछ जे प्रॉमिस दोछि वेरी गुड प्रॉमिस ये रिसीव करछ तो इंडेमनिटी होल्डर राइट्स का अगेंस्ट थिबो इंडेमनिफायर अगेंस्ट माने आमे एटा कहि परिया कोन राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर अगेंस्ट इंडेमनिफायर माने जे भी ताको कहिछि कि एतिकी जिंस को प्रॉमिस करछि तते मु करी एली कहि ताडू ये कोन रिकवर करि परिबो सेडा आमे जानिबो हैला द थिंग हैज टू बी क्रिस्टल क्लियर all damages which may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies se kon goes all damages which he may be compelled to pay
जहाँ किसी भी डैमेज अच्छी जोड़ा से कंपल अच्छी पेमेंट करिया पई in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies हैला जहाँ किसी भी केस फाइलिंग गुड़ा अच्छी जहाँ किसी भी प्रोसीडिंग्स अच्छी जोड़ा की एक्टिवेट ही जाइची and the case proceedings are actually related to the contract जहाँ किसी भी contract तांको भितरे हिची से जिनसे को पूरा पूरी relate हे गया अच्छी और ताको धरी की जदी आपको किसी damages माने बियर करिया पड़ला किबा एक्सपेंसेस बियर करिया पड़ला सब जिनसे कोन ये पेमेंट करिया अछि किबा रिकवर करि परिबो the second thing is all costs which he may be compelled to pay in any such suit if bringing or defending it he did not contravene the orders of the promisor and acted as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend the suit देखो अल्टीमेटली से गोटे जिंस कहूची जहाँ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को धरिकी ताको लॉस बियर करिया पड़ा नले एक्सपेंसेस इनकर करिया पड़ला नले किछि कॉस्ट लागिला माने ता हाथरु किछि पैसा गला को जिंस को धरिकी ब्रिंगिंग हैला से जिंस टिके बेले स्टेबल करिया पई डिफेंड करिया पई हैला जदी के केस कर दै छै ऊपर ताको डिफेंड करिया पई he did not contravene the orders of the promisor रो ऑर्डर ता contravene करिनी and acted as it would have been prudent for him माने जनरल सेंस रे गोटे पर्सन किमिति एक्ट करिया सिमति आगा एक्ट करछि in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend the suit माने सब जिंस को धरी कोन हला ताको गोटे एक्सपेंसेस हला ता हाथरु से डिफेंड करू कि स्टेबल करू कि जिंसडा माने कोन कंट्रावेंशन न हेले हेले ता ऊपर जदी किछि केस लागो कि कंट्रावेंशन हो जेमिति भी जदी ताको पैसा लागिला तो से जिंस से रिकवर करि पारे हैला all the sums which he may have paid under the terms of compromise of any such suit हैला माने कोन जदी इंडेमनिटी होल्डर माने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हेची से भितरे जदी ताको किति जिंस माने कोन कंप्रोमाइज करिया पड़छ माने स्टेबल करिया पे किति जिंस कोन कंप्रोमाइज करिया पड़छ तो कंप्रोमाइज करला कोन से किमि करियो ताको टिके पैसा दे करियो किबा पैसा कोन माने कमे की करबो तो जहा किछ भी ता लागि लॉस हेची सेडा भी से रिकवर करि परिबो was not contrary to the orders of the promisor and was one which it would have been prudent for the promise to make in the absence of contract of indemnity or if the promisor authorized him to compromise the suit. This section is not exhaustive and does not set out all the reliefs which an indemnity holder who has been sued may get. It leaves untouched certain equitable reliefs which he may get. The rights of the indemnity holder are not confined to those mentioned in the section. Even before damage is incurred, it is open to him to sue for the specific performance of the contract of indemnity. हैला माने ए जिंस होची एग्जॉस्टिव नै ए भितरे बहुत किछि जिंस माने एक्टिवेट हेई पारिबा आरी कि से पूरा पूरी राइट उडा डिस्क्राइब करिनी हैला तो हमें कोन लिखिया द फर्स्ट लेखो राइट्स फर्स्ट थिंग होची डैमेजेस all damages compelled to pay all costs compelled to pay compelled to pay माने कोन ताको बाध्य है कि पेमेंट करियो पड़ला कि ताको बाध्य है कोन इनकर करियो पड़ला damages ର मीनिंग कोन लॉस हैला all damages compelled to pay all costs compelled to pay तापर कोन all sums which he may have paid under terms of any compromise हैला जेतो एडा गुटे पूरा पूरी माने फुल प्लस सेक्शन नाही तो जहां कुछ भी राइट्स प्रेजेंटली अवेलेबल अछि से जिंसरा डिस्कशन हैला तो फर्स्ट थिंग होस जदी किछि लॉस इनकर करियो पड़ला सेकंड थिंग होस किछि एक्सपेंडिचर थर्ड थिंग होस जदी कंप्रोमाइज करला किछि ताको कोन सम दबाव पड़ला सम माने कोन अमाउंट दबाव पड़ला क्लियर दिस आर द राइट्स ऑफ indemnity holder against indemnifier all damages compelled to pay all costs compelled to pay all sums which he may have paid under the terms of any compromise से जो कहि if the compromise was not contrary to the orders ए सब कि जिंस किछि दरकार नै हला एक्स्ट्रावेगेंट जिंस जागा सब
खाली अंडरलाइन करो कि दिस सेक्शन इज नॉट एग्जॉस्टेड, माने थिंग्स मे बी एडेड इन फ्यूचर, माने एथिरे आउरी फ्यूचर रे केती पॉइंट रोडा कोन हमरा ऐड हेई पारे। क्लियर? देखो गोटे केस ला पॉइंट से कहिची, माने मे बी he can ask जिनसे कौन अलग it was held that in a case of contract of indemnity the liability of the party indemnified, माने the liability of the party indemnified to a third person, माने indemnified to a third person माने कौन third person रो involvement अच्छी and the contract of indemnity took place is not only contemplated at the time of indemnity but is the very moving cause of that contract, and in case of such a nature the costs reasonably incurred in resisting, lekho एडा अंडरलाइन करो, the costs reasonably incurred in resisting or resisting माने कौन retaining or एडा लेस करिया reducing or ascertaining माने कौन जानिबार calculating the claim may be recovered हैला गोटे क्लेम अच्छी से क्लेम टा केते मिलबा कोन मिलबा से जिंसडा रिटेन करिया पई हैला सेति की क्लेम अच्छी सेति की मिलिया पई जदी काउ तमे कमिशन दोचो कि सेति की अमाउंट मते जिंजेले मिललाळे देखो रिटेन करचो रिड्यूस करचो जदी तमे काउ दबार अच्छी तो के कहला मु टिके कमै देबी तो मते टिके पैसा दियो से जिंस किबा कोन एसेटेनिंग एक्चुअली तो केते क्लेम मिलबो जानिबा पई इंक्वायरी करिया पई जाओ जदी किछि पैसा दोचो तो से जिंस कोन रिकवर करि परियो तमे हैला एडा गोटे नुवा केस लो पॉइंट वेरी इंपोर्टेंट मार्क करो लेखो लिखि दियो एडी केस लो पॉइंट जब मु दीडा का डिस्कस करछि आई थिंक टू थिंग्स आई हैव रिटन हियर बट एडा पाखरे लिखि दियो फर्स्ट थिंग होची द लायबिलिटी ऑफ द पार्टी liability of the party indemnified to a third person is not only limited at the time of indemnity, but also when reasonable circumstances took place and certain expenditure is incurred for what तीनटा जिंस से कहिछ गोटे कोन retain to reduce or to ascertain the claim amount, हेले एक्सपेंडिचर इनकर्ड ता जहां भी अछि this may be recovered from indemnifier हैला एबे टिके क्लियरली बुझिथियो एडा एक्सपेंडिचर जहां भी इनकर हिची सेडा रिटेन करिया पे रिड्यूस करिया पे किबा असर्टेन करिया पे जहां भी माने एक्सपेंडिचर डा इनकर हिची दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम द indemnifier हैला के रिकवर कर परियो indemnity होल्डर
The liability of the party indemnified to a third person is not only limited at the time of indemnity but also when reasonable circumstances took place and certain expenditure is incurred to retain, reduce or to ascertain the claim amount. Clear? एटा होची हमरो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. वेरी सिंपल. एबे हमें देखिए कोन नेक्स्ट टॉपिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देखो section 126 defines the expression the contract of guarantee as a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person in case of his default. माने से कौन कहूची contract of guarantee माने कौन contract to perform the promise. अच्छा तुमको दीटा बिट क्वेश्चन मु कहूची एबे. फर्स्ट थिंग मु कहितली कोन contract of promise माने कोन contract of indemnity. Contract to perform the promise माने कौन contract of guarantee. हैला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से तळे लिखि दियो ताकि तमे कोन बुझी पारियो. Contract hashtag पकेकी जेतळे लिखुछ जानि दबो कोन सेटा गुटे बिट क्वेश्चन. हैला फर्स्ट थिंग कोन contract of promise is equal to contract of indemnity. Now contract to perform the promise. Contract to perform the promise माने कोन contract of guarantee. कंफ्यूज होबन जेतलो तळे तळे गुटे पॉइंट कोन जेबे तुम लाउची गुटे पॉइंट तुम कंफ्यूज होबो कि दीडा सिमिलर पॉइंट्स अछि तो ट्राई करिवो से दीडा जिंस गुटे जगह रे लिखिया पई ताकि तुम कोन बहुत जल्दी से जिंस मन रहि हैला. Contract of promise होची contract of indemnity. Contract to perform the promise होची contract of guarantee. Clear? Contract of guarantee भितर देखा contract of guarantee भितर से कहूची a contract to perform the promise or discharge the liability of a third person. माने कहूची कोन third person रो जहा भी liability अछि सेटा से discharge करियली कहूची बट indemnity रे से कोन कहूची make good the loss. माने जदि से पर्सन डा किछि तार लायबिलिटी अछि सेडा से रिकवर करि पानी किबा देई पारनी सेडा मु जिन देले रिकवर हल्ला आलिया देखिबी सेडा होछि कोन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. बट एथिरे से कोन कहूछि डिस्चार्ज द लायबिलिटी जदि से पर्सन दोनी तो ए पर्सन देबा पई बाध्य or of a third person in case of his default. Default माने कोन से जिनसडा जदि न हेले if doesn't happen. The components of this contract consist of the surety, principal, debtor and creditor. Surety, the person who gives the guarantee is called a surety. जे भी guarantee दोछि ताको हम कोन कहया surety कहया. Surety कोन अछि पचार चंदिमती. Principal, debtor माने the person in respect of whose default the guarantee is given. माने कोन जा लगी जा पे एटा भलरे माने surety डा कोन responsible रहबो. Creditor होछि कोन the person to whom the guarantee is given. जागो हम guarantee दोछु सी होछि creditor जा पे दोछु से कोन principal, debtor और जे दोछि से कोन surety. Heading दियो contract of guarantee. The contract to perform the promise or discharge the liability and obligations of a third party in case of his default or non-performance. In case of his default or non-performance. इतने parties क्या अछंदी parties to contract, parties involved,
पार्टीज इन्वॉल्व भितरे तीनटा लोक अछंदी के प्रिंसिपल डेटर जान जानी ऑर्डर टा मुझे लिखी कहीं प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर को मझे रोचे सब कौन श्योरिटी श्योरिटी आउ क्रेडिटर श्योरिटी होचे कौन पर्सन हु provides the guarantee person who provides the guarantee clear creditor माने कौन person to whom guarantee is given ता तळे लेख receiver of guarantee clearly तुमको गोटे वर्ड रे बुझी जिवो receiver of guarantee प्रिंसिपल डेटर माने कौन पर्सन on whose person against whom the guarantee is provided आ ये होचे कौन obligator of guarantee giver of guarantee फ्रेज गुडा ग्रामेटिकली ठीक न रही पारे बट मु बुझौची कोन गारंटी देबा लोक गारंटी रिसीव करे लोक एमती कह कि तमे मन रखिबो इनफॉर्मल वे रे क्लियर प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी एंड क्रेडिटर एडी कोन लिखा है देखो से कहूची श्योरिटी इज द पर्सन हु गिव्स द गारंटी प्रिंसिपल डेटर माने द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन माने कोन एडा होची तर ऑब्लिगेशन कार भूल पे कार ऑब्लिगेशन पे हमें गारंटी दउछु दैट पर्सन इज द प्रिंसिपल डेटर आ क्रेडिटर माने द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन जे की गारंटी मागुछि हम clear the guarantee may be either oral or written the tripartite agreement please underline the tripartite agreement which contemplates the principal debtor creditor and surety माने देखो से कहूची this contract कोडे थिला हां एडा oral हे पारियो written हे पारियो oral or written but this contract is always a tripartite this is a new word tripartite माने कोन three people मजरे जहा कि माने three people रो parity डा ये करी कि गोटे जतरो agreement हो जे दैट्स tripartite agreement ठीक अछि it's oral and written oral or written जहा भी हे पारियो orally भी तंके सेटल करि पारे but generally tripartite agreements are always in a written form हैला पूरा contract of guarantee जतरो एमिति अछि then only you can just revise the concepts easily consideration for guarantee section 127 provides that anything done or promise made for the benefit of the principal debtor may be a sufficient consideration for the surety for giving guarantee माने से कहउछि कोन anything done or any promise made माने done or promised to do for the benefit of the principal debtor का benefit पाई principal debtor benefit पाई may be a sufficient consideration to the surety for giving guarantee माने से कोन कहउछि surety जदि principal debtor को दीडा पॉइंट से कहला done or promises to do any act for principal debtor's benefit is equal to sufficient consideration of guarantee बुझला law language किमती कोची मु सिंधी लिखली done or promises to do any act for principal debtor's benefit. Debtor's benefit is the sufficient consideration for guarantee.
कोची सफिशिएंट कंसीडरेशन होची जहां किछि भी प्रिंसिपल डेटर को बेनिफिट हेलाळे अछि माने जिंस कोन रे जदी से कहूची से पर्सन जदी भूल कला तो मु तुमको 10000 रुपीस देबी किबा कोन तमरो गाड़ी जहां भी अछि सेटा मु फ्रीली ये कर देबे फ्री इंश्योरेंस कर देबे ता पे जहां भी प्रिंसिपल डेटर बेनिफिट एडी अछि एली कहले कोन प्रिंसिपल डेटर बेनिफिट अछि एली कहले कंसीडरेशन काउंट हो देखो एग्जांपल लागो B requests A to sell and deliver to him goods on credit. A agrees to do so, provided C will guarantee the payment of the price of goods. C कौन guarantee करछेडी ना payment of the price of goods. C promises to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. This is the sufficient consideration for C's promise. ହେଲା कौन sufficient consideration ना C promise करछि to guarantee the payment in consideration of A's promise to deliver the goods. तांकर कौन contra promise एटी होउची से जिंस कौन sufficient consideration count हबो एग्जांपल डेगो as usual very important काहेकि डायरेक्टली से क्वेश्चन दे दोछि पिलाने इग्नोर करछन तो क्वेश्चन दे दोछि A sells and delivers goods to B. C afterwards requests A to forbear to sue B for the debt for a year and promises that if he does so, C will pay for them and default of the payment of B. A agrees to forbear as requested. This is a sufficient consideration. माने देखो forbearance किंबा कोन act दीडा जे जिंस काउंट हबो से कहिछि doing or promise to do से कौन को जेडी forbear करछि माने से कोन bear करछि से जिंसडा को तो सेडा भी sufficient consideration count हबो A sells and delivers goods to B. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. से कौन कोचे A sells and delivers food to B. हैला A कौन goods sell करला और deliver करला B को. C afterwards, without consideration, agrees to pay for them in default of B. माने C कौन कोचे जदी किछि भी माने पेमेंट प्रोसीजर रे किछि भूल भाल हला तो के पेमेंट करबो C afterwards will pay for their default. B जदी किछि डिफॉल्ट इनकर करले तो C पेमेंट करे. एडा कौन एक्ट हेला एक्ट ऑफ डूइंग बट नॉट प्रॉमिस टू डू. आगरे प्रॉमिस टू डू थिला. अब एडी कोन दिस इज अ केस ऑफ कॉन्ट्रा प्रॉमिस एडी कॉन्ट्रा प्रॉमिस रो केस आसिला एडी आसिला प्रॉमिस टू डू रो हला तो मैं जदी पापे कि पूरा केसटा कोन कहउछ तो आउरी सिंपल हे जेबो तम रिवाइज करिया काहेकि मल्टीपल कांसेप्ट गुड थोर रिवाइज करला छेली कहले तमरो शॉर्ट नोट्स आगा हेल्प करियो प्रॉमिस टू डू आ एडी कोन हला डूइंग एक्चुअली डूइंग इट क्लियर This section takes into fold its fold past consideration also. Please underline this section takes into fold past consideration also. Okay. This section takes into account past consideration also. माने कौन जदि आगे किसी से कंसीडरेशन ऑलरेडी दे देछि 10000 की 20000 रुपीस से ऑलरेडी दे देछि किमा कोन ता पाखरे रहि जेछि आ पैसा तो से कोन कहय से पैसा रिटर्न न करी से कहे कि जेतु तो पैसा मो पाखरे अछि तो तू मते कोन गोटे श्योरिटी हिसाब रे एक्ट कर दे जा पाखरे माने पैसा अछि से पैसा को अकॉर्डिंगली तू श्योरिटी वाला काम करि दे सेडा भी से कहि पारे माने पास्ट कंसीडरेशन इज आल्सो टेकन इनटू अकाउंट किमा पास्ट रे मु देछि कहि कि एबे काम करियो भी कहि पारे हैला सो पास्ट कंसीडरेशन इज टेकन इनटू अकाउंट Clear? तापर से कौन गोजे देखा in Rajendra versus Mahila Chandra by 2012 case the case is within the purview of example merely because the appellant made promise to plaintiff that in case first and second defendants who were required to pay the sale price to her failed to pay the same he would pay the sale price. The promise was without consideration and therefore the said agreement between the plaintiff and third defendant was void. Please underline the promise was without any consideration. Ultimately contract of guaranteed आसिला बट से कहूची कोन से भितरे प्रॉमिस टू माने प्रॉमिस भितरे कंसीडरेशन पॉइंट इन्वॉल्वमेंट नाही तो से कोन कहूची जहां भी एग्रीमेंट हेची से अल्टीमेटली void हो जिवो needless to say that a void agreement cannot be enforced by law and therefore since the status of the appellant is that of the guarantor his case is covered under the ambit of the example तो से कोन कहूची and he is not liable to pay the sale consideration or any other amount of the plaintiff on account of the failure in making the payment of the first and second defendants. Ultimately से कहूची जेतु consideration रो involvement नाही तो जिनसडा void हेला avoid हेला एले कहले के कागो liable नाही कि के कागो obligated नाही हेला सब जिनस important नाही एडी कोन ए पॉइंट जहां भी अछि हम ऑलरेडी जानिछ नो पॉइंट किछि नाही भितर तापर से कहूची it was held that it is clear that the question as to whether the
deed in question is a deed of guarantee or not depends upon the terms under which the guarantor binds himself. It is a important point. देखो whether the deed in question is a deed of guarantee or not depends upon the terms under which the guarantor binds himself. माने कोची कोन deed जहाँ भी होची से deed टा actually guarantee deed of guarantee माने agreement of guarantee ना किमिति जानिबा ना जिमिति की the terms under which the guarantor binds himself माने जे भी guarantor अछि ना जे guarantee दोची की कोन भी माने person जहाँ भी terms हेची से terms गुडा को देखिबी आम चिन्हर अछि कि सेटा actually agreement of like guarantee ना contract of guarantee ना under the law, he cannot be made liable for more than what he has undertaken. Please underline, cannot be made liable for more than what he has undertaken. जहाँ कुछ भी टर्म्स अच्छी ता भीतर भीतर अगर जहाँ भी कथा आवर अच्छी से ना ताड़ अधिक गोटे पॉइंट भी से कहि परिबो. There is no ambiguity. Ambiguity माने no confusion that the appellant has not undertaken that he would repay the loans of the respondent number 2. In case of the respondent number 2 fails to discharge its liability, therefore the appellant cannot be made liable for more than what he has undertaken. माने से कोच कोन जहां भी नंबर 1 और नंबर 2 भीतर माने गारंटी हेला आलको कॉन्ट्रैक्ट गारंटी हेला आलको जो भी टर्म्स मेंशन हेची से टर्म्स में आगा से डिस्कस करि परियो कि से टर्म्स में आगा से पछरी परियो. Ultimately share capital chapter रे हमर गोटे पॉइंट थिला the liability of the shareholders is limited to the value of unpaid call on shares. माने कोन जेति कि से पेमेंट करनी पूरा जिनसटा अछि से पई से लायबल जति कि पेमेंट कर दिछ हम पछरे कि नै जति कि अनपेड रहला सेडा पछरे तो पूरा पूरी स्कोप अछि से स्कोप भितरे ये जति कि प्रॉमिस करछि ता पे आगे ये लायबल हो ताडू गुटे पॉइंट भी अधिक पछरी पारियनि किता बुझला तो लेखो the contract of guarantee limits the liability of surety to the extent he has promised and not beyond that. ठीक अछि. Contract of guarantee limits the liability of the surety to the extent he has promised and not beyond that. टिके भी ताडो अधिक किछि से कोन प्रॉमिस करि परिबन. तापर देखो contract of indemnity and guarantee clear cut difference ता तमु जेतेळो क्विक रिवीजन दरकार पडिबो contract of indemnity and guarantee ए चार्ट रो स्टार्ट करबो पढला बेलकु तमे पछन रो स्टार्ट. In this contract there are two parties already कोन three parties अछंदी. The primary liability is on the indemnifier, the principal liability is on the principal debtor and secondary liability is on surety. कहीं प्रिंसिपल लाइबिलिटी और सेकेंडरी लाइबिलिटी माने कोन प्रिंसिपल लाइबिलिटी माने मेन लाइबिलिटी पूरा पूरी लाइबिलिटी का ऊपर अछि जे पैसा दबार अछि तार रिस्पांसिबिलिटी पैसा रिटर्न करिबार आ सेकेंडरी माने तार जदी न हेले का धरिया हमें श्योरिटी को धरिबा तो सेकेंडरी लाइबिलिटी. The indemnifier is not acting at the request of the debtor. Please underline not acting at the request of the debtor. हैला debtor रो रिक्वेस्ट रे से के काम करनी से कोन गोटे कॉन्ट्रैक्ट हिसाब रे काम करछ. The surety gives contract at the request of the principal debtor. Principal debtor ता रिक्वेस्ट करियो कि यार मते विश्वास करनी से तू आसी कि surety दे ताकि कोन मते पैसा मिल जिवो किबा मो इजीली लेंड करि पारि. The possibility of any loss happening is only contingency against which the indemnifier undertakes to indemnity. Please underline there is a point of contingency here. माने जदि किछि भूल बार हेला किबा लॉस इनकर हेला तो से लॉस पई से कंटिजेंट लॉस पई ये लायबल हे पारे. बट एडी कोन देयर इज एन एक्जिस्टिंग डेट माने तमे जानिचो कि केति कि जिंस पई तमे लायबल एली कहबो तमे कहि परियनि कि से जिंस हेले से मरियले मु देबी एली श्योरिटी कहि परिबो हैला कोन खाली कोन कहयो कि एति कि जिंस पई मु लायबल 10 लाख रुपीस देछि 2 लाख रुपीस पे मु श्योरिटी रहबे तो से 2 लाख पर्यंत आगे से पचरी परिबो. बट एडी कोन कंटिजेंसी माने जहां कुछ भी कंटिजेंट मे और मे नॉट हैपन जहां भी होबो सब जिंस पे ये लायबल रहबे. The indemnifier cannot sue the third party in his own unless there is an assignment. Indemnifier directly sue कर परियनि third party को unless and until it is mentioned in the agreement. But the surety is entitled to proceed against the principal debtor when he is obliged to perform the guarantee.
हैला जदि ग्यारंटी रहिला बेलू से कौन कोई ग्यारंटी आनथिबो मते कहलो श्योरिटी को कौन कहिथिबो गोटे जिनस कहे कि यार मु पेमेंट कर देबे ताको तू बस श्योरिटी रो सेते जे आ जदि से पेमेंट करि परलानी तो श्योरिटी को पचारिबे तो श्योरिटी कौन कह रागी के ता ऊपर केस करि परिबो ताको कार माने कॉन्ट्रैक्ट भितर तिबा दरकार नै कॉन्ट्रैक्ट भितर किछि पॉइंट दरकार नै से रागी के डायरेक्टली केस करि परियो का अगेंस्ट रे प्रिंसिपल डेटर अगेंस्ट रे बुझि पालो तो प्रिंसिपल डेटर अछि रे हैला तो श्योरिटी मझिरे अछि क्रेडिटर अछि एडी तो प्रिंसिपल डेटर कहले मु आपको जिमती हेले पेमेंट कर देबी तते किछि हेले माने लाइक इनकर करिया पड़बनी बट अल्टीमेटली जतलो ड्यू डेट आसिला ये पेमेंट करि पारलानी तो क्रेडिटर आपको आसी पचारियो आपको आसी पचारलाडो ये ताको बुझेबो बट आ ऊपर रागी थियो ना नहीं रागिले कोन करे डायरेक्टली केस कर दे पारे ताको किछि भाबिया दरकार क्लियर कोन पे कहलो कि मो फसी हेले पे नहीं हिंदी कह The contract is between indemnifier and indemnified. Indemnity holder other name होची indemnified. Indemnity holder or indemnified. Clear? The contract is between the principal debtor, creditor, surety, creditor, the principal debtor, surety. Three कौन थिला सेटा tripartite. हैला ए जो tripartite agreement ता किमती हेची तांको भितर हेची A रो B को B C को C आउथरे A को एमती हिलाडे हैला it is defined under section 124 126 when 2 marks question is asked for 7 marks कौन करिया ए जा लिखिया 2 parties 3 parties section number एडर स्पेलिंग रे डिफरेंस अछि तार I अछि तार I नै हैला हिंदी पॉइंट जा लिखिया सेडा इरेलेवेंट पॉइंट जागो बट जिंस कोन हम कहि देली तुमको ए भितर इंपोर्टेंट पॉइंट मु कहि दोची ए तीनटा पॉइंट होचे तमर इंपोर्टेंट देयर इज अ चांस ऑफ यू गेटिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट माने तुमको मु कहूची क्वेश्चन पेपर पैटर्न दा तमे केबेले प्रेडिक्ट करि परिबो द थिंग यू कैन डू इज सब जिंस रो ग्रिप रखिबा माने जिंस कोन एडी देखा हम गोटे नुवा पॉइंट मिलला कंटिजेंसी फैक्टर ता को जिंस रे अछि बिट क्वेश्चन भी हे पारियो 2 मार्क्स क्वेश्चन भी हे पारियो 3 मार्क्स क्वेश्चन भी हे पारियो किमती हबो मु सिंपली कहि दोची कंटिजेंसी फैक्टर इज इन्वॉल्वड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ट्रू और फॉल्स डायरेक्टली से पचारि पारियो ट्रू नॉट प्रेडिक्टेबल not information not provided none of the above इमती भी से क्वेश्चन पचारि पारे एमसीक्यू क्वेश्चन रे काहे कि 2 मार्क्स क्वेश्चन जेतो से पचारि कि कंटिजेंसी फैक्टर ता अछि हैला कंटिजेंसी फैक्टर को धरि कि गुटे पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट से कोन कहूची कि एडा भूल कंटिजेंसी फैक्टर एथरे हे पारेनी जस्टिफाई योर आंसर विथ सफिशिएंट प्रोविजंस हैला तो एडा कोन तुम जानछ कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी दा इज बिल्ड अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंटिजेंसी फैक्टर अछि तो जेतु कंटिजेंसी फैक्टर ता एरा ऑलरेडी इन्वॉल्व हे गया अछि तो ए पर्सन जे भी कहूची तारो माने कंटेंशन गुडा को ठीक नै हैला इमिति से क्वेश्चन पचारि परबो किमा कोन डायरेक्टली तुम फिल इन द ब्लैंक्स भी पचारि परबो जहां भी हे परबो तापर देखो लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी रो ऑब्लिगेशंस कोन कोन रहला The liability of the surety arises only when the principal debtor fails to pay the debt to the creditor. Surety रो केबे रोल आसीबो जेतळ को पेमेंट करि परियोनी कोन प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को surety को धरि Section 128 provides for the liability of the surety. The same section provides the liability of the surety is co-extensive with that of the principal debtor. Co-extensive माने almost similar with the liability of the principal debtor. जे भी principal debtor अछि माने ताको जहां भी liability अछि माने ताको अछि एति के पैसा liability ताको अछि एते पैसा जिम्मेदारी ता मुंडो पर एति मुंडो था अछि तो सेम जिंस surety के बो थिबो सेम but different हैला तो unless it is otherwise provided by the contract जदि contract कोछि कि नै आको एते severely punish करिबोनु surety को हैला एते severely ताको वाला torture करिबोनु unless and otherwise माने contract में जदि provide ही जोछि तो ताको हम एते से कहि पारिया माने से कोछि कोन liability of surety is similar to liability of principal debtor unless the contract mentions a lesser performance
बुझी पाला लेस परफॉर्मेंस जदि टिके कम कहूची कि एते सीवियर हबनी देन ठीक अछि whether the letter of guarantee is issued by the guarantor guarantees repayment of only the principal sum and does not guarantee the payment of any interest he could not be liable for the payment of interest देखो very important point एटा तुम बहुत माने भलो क्वेश्चन आसी पारे एथ्रु माने आमे देखलु कोन प्रिंसिपल डेटर अछि श्योरिटी अछि एंड क्रेडिटर अछि थ्री पार्टीज हला देखो स्टोरी वाला बुझियो मन रहि जेबो प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर को पूरा पूरी लायबल कोन कोन जिंस लायबल मते कहलो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दीडा जिंस लायबल तो श्योरिटी जे भी अछि से कोन ताको प्रॉमिस करियो कि मु देखि कि ए पर्सन तुमको सम पेमेंट माने सम पेमेंट माने अमाउंट पेमेंट ऊपर मु गारंटी देबी कि ए पर्सन आपको अमाउंट पेमेंट कर देबो ए सम टा कोन कोन गारंटी जानछ ना प्रिंसिपल अमाउंट पे ये गारंटी इंटरेस्ट अमाउंट पे नो गारंटी इंटरेस्ट अमाउंट पे से ताको पचारि पारे जदि से किछि इंटरेस्ट दोनी सेडा पे से प्रिंसिपल डेटर को आगा पचारि पारे हला वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है काई गारंटी देला को के एडा एते ध्यान दबोनी कि ताको इंटरेस्ट पे पचारिबे नै हला खाली प्रिंसिपल अमाउंट पे श्योरिटी को पचारि पारे गारंटी अमाउंट इंटरेस्ट हम के बेले पैसा पचारि पारे वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट SN Prasad versus Monet Finance Limited रे डिसाइड हेतला इन द 2011 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 320 कंटिन्यूइंग गारंटी देखो एवडा सब बहुत सानो सानो टॉपिक माने देखो अल्टीमेटली हमरो कोन से लाइफ काई सेडा लायबिलिटी अछि पूरा फैक्टर रो हमको एतिया जिंस जानिबा मिलला एतिया जिंस मन रखियार अछि ए जिंस रो ए तीनटा पॉइंट लायबिलिटी रो गुटे लाइन हला तो खाली देखिया को पैराग्राफ देखिया को पेजेस बट अल्टीमेटली जिस्टा बहुत कम से जिस्ट पे हमको पेशेंटली कोन गुटे गुटे जिंस डाइव करिया पड़े गुटे गुटे टॉपिक देखिया पड़े आ से टॉपिक भीतर हम सब क्लासिफाई कर दो कि एग्जाम रे कोडा रेलेवेंट नै तो फर्स्ट टाइम जहां भी पढ़छो सेटा जतलो तुम्हें 100% फोकस देकी पड़िबो नेक्स्ट टाइम तुमको 50% आगा काम करिया पड़े बिलीव मी 50% माने 50% काहेकि सब जिंस एतिकी ही जैतिबो आ एग्जाम आगरे सेटा एतिकी हबो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पिला ने फर्स्ट टाइम देखथे यू विल बी सीइंग इट फॉर द थर्ड टाइम सेटा भी तुम कांसेप्ट सब मन अछि जस्ट बिकॉज़ मु गारंटी कोन पे दोछि तमे संगे संगे लेखुचो सुनुचो कांसेप्ट एग्जांपल सुनुचो लेखुचो तीनटा जिंस जतलो साइमल्टेनियसली हबो ह्यूमन ब्रेन सेटा बहुत दिन जे रिटेन कर तमे ट्राई एंड टेस्ट करि परियो बाकी चैप्टर्स को धरि के एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को धरि के यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट जहां भी एग्जाम क्वेश्चन मु देबी जहां भी एग्जाम क्वेश्चन मु पचारबी यू कैन क्लियरली आंसर बिकॉज़ तुमको एग्जाम क्वेश्चन से तो फरक पड़नी तुम कांसेप्ट बहुत भल से जाने जेतिकी से बुल्ले की देई पारला आमे देखिलो टेंडर कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को बिडिंग केमती आसे बिड्स केमती आसे के केंदी रिसीव करछि के बिड करि पारियो बिड एग्रीमेंट केमती हबो सब जिंस रा हमर गोटे लॉजिक अछि काहेकि हम गोटे स्टोरी फ्रेम कर दिलो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ब्रिज गोटे हैला ब्रिज कॉन्ट्रैक्ट दिया हैला पैसा एतिकी हैला कम कॉस्ट देबार अछि क्वालिटी अधिक देबार अछि टाइम कम देबार अछि सब पॉइंट हम मन अछि ना नै त हमें कोन लिविंग इन द सिचुएशन रे लिव करी कि से जिंस कोन मन रखुछ क्लियर कंटिन्यूइंग गारंटी देखो Section 129 of the Act defines the expression continuing guarantee as a guarantee which extends to a series of transactions. गुट्टे transaction पे guarantee is a normal guarantee. Continuing guarantee माने multiple transactions नो involvement अच्छी. लेखो guarantee involving multiple transactions. Guarantee involving multiple transactions. बुझला? A guarantee for future performance may be either restricted to a debtor or liability of a certain amount to be incurred once for all, or it may be continuing. If the liability extends to a single transaction, it is specific. In case it extends to a series of transactions, it is continuing. अच्छा, जहाँ भी guarantee अच्छी guarantee रो types हमें कौन लिख लो? Guarantee associated with a single transaction, associated with multiple or number of transactions. तो एटा कोन स्पेसिफिक गारंटी
और एटा कंटिन्यूइंग गारंटी बिकॉज गुटे जिनसर गारंटी पीरियड टा सरला बेलू कोन आउ गोटे ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो जिवो तो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड से कोन को सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन मस्ट बी पैरेलल माने जहां भी होची सेटा कोन सब जिनस पैरेलली चालियर अछि गुटे आजी गुटे वर्ष पर एमती केबे हे परियो तापर से कुछ रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी दिस मे बी इंपोर्टेंट बिकॉज कोन गारंटी गुटे जिनसर स्पेसिफिक गारंटी रो केबे रेवोकेशन रो टॉपिक आसेनी काहेंगी गुटे गारंटी तमे सब जिनस जानि की करि परियो बट कंटिन्यूइंग गारंटी माने कोन गुटे पीरियड ऑफ टाइम पे तमे नोचो बट से पर्सन कोन आ चाहुनी से गारंटी रे कंटिन्यू करिया पय तो से जिनस रिवोक केमती हे पारे सेला हम देखिबा रिवोकेशन रे से कोछि रिवोकेशन बाय श्योरिटी और रिवोकेशन ऑन द डेथ ऑफ द श्योरिटी जदि से पर्सन श्योरिटी रो डेथ हेला कोन हबो एंड जदि श्योरिटी माने लाइक डायरेक्टली कहि देला तो कोन हबो Section 130 provides the continuing guarantee made any time revoked by the surety as to future transaction by the notice to the creditor. हैला किमिति दबो notice to creditor. Creditor को गोटे simple notice देकी he can just end the contract of guarantee. आउ डेथ हेला तो से notice दे परियोनी खाली कोन नॉर्मल केस revocation surety हिसाब रे जदि ताको इच्छा हला revoke कर देबा पय कैंसिल कर देबा पय no longer continue करिया पय से notice दबो कि I no longer want to continue as a guarantee to the series of transaction I have previously promised. ठीक अछि रेवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ जदि डेथ हेले कोन हबो नॉर्मल केस तो से कहले कोन हमें ऑर्डर टा दे देबा नोटिस दे देबा बट जदि डेथ हेले कोन करे सेक्शन 131 provides the death of the surety operates in the absence of any contract to the contrary as a revocation of continuing guarantee so far as regards to the future transactions माने से कहछि कोन in the absence of any contract जदि किछि contract रे मेंशन हिछि कि डेथ हेले मो ए पर्सन को पचारि बेली कहि देन से डायरेक्टली अप्रोच करि परियो बट जिस से जदि कहछि कि डेथ हेले किछि पचारि परियोनी किबा किछि contract नाय किछि ये नाय तो कोन हबो जेमिति जेमिति रिवोक हेबा कथा सेमिति सेमिति रिवोक हबो क्लियर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी देखो डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी माने when the obligations of surety will end when the obligations of surety will end केबे तार obligation सरीबा पे आसीबो सेडा हमें देखिया हैला by giving notice to the creditor directly से notice दे पारे creditor को death of the surety तार death हेला by variance in terms of contract जदि किछि variance हैला contract भितरे हैला से कहछि कोन गारंटी डा तमे एडी लोकली रही कि भी प्रोवाइड करि पारे बट एबे कहछि कोन तमे मल्टीपल जगह को जिबार अछि जोडा कि तापे पॉसिबल नै तो कोन जे तो कॉन्ट्रैक्ट रे वेरिएशंस पड़ा आसला एडी लेखो variations in the terms and conditions of contract variations in the terms and conditions of contract making it impossible to perform जदि से श्योरिटी जे भी अछि ताको इम्पॉसिबल हेला परफॉर्मेंस माने परफॉर्मेंस टा कैरी आउट करियार चांस हेलानी देन एटा कोन हो टर्म्स एंड कंडीशन उडा को वेरिएशन हे जिवो क्लियर बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर निजे कहले कि नाही दरकार नै कि मो पे से पेमेंट कर देला तो कोन तार गारंटी टा सरी जिवो व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विथ द प्रिंसिपल डेटर बाय गिविंग टाइम टू अग्रीज नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर हैला श्योरिटी रो मेन पर्पस कोन आ ऊपर केस न हैला अळे से देखिबो मजरे रहिबो से देखियो कोन रखिबो ताको से कहै कि नाही ये पेमेंट कर देबो तमे टिके जब बट जदि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर भितर एमती एग्रीमेंट हेला एमती राज माने लाइक हेला तांको भितर सेटलमेंट की मो तते केस करबिनी किबा मो तते एडिशनल टाइम देबी आ किछि टर्म्स एंड कंडीशंस हेला जो द्वारा कि श्योरिटी को आ किछि काम करिया को पड़ो क्लियर देन कोछ कोन now when creditor act or omission impairing surety's eventual remedy by creditors act or omission impairing surety's eventual remedy माने जहा किछि भी surety लागि remedy receive हेई थांदा से जिंस कोन सीज हेई गला से जिंस कोन कंप्लीट हेई गला केमिति ना act or omission माने कोन एमति जिंस किछि एक्सक्लूड हेई गला कॉन्ट्रैक्ट रो जोडा कि surety रिलीज हेला से कन माने अल्टीमेटली गुटे जिंस से कहूची एदर से surety लागि डायरेक्टली किबा इनडायरेक्टली रिलीज हेला कॉन्ट्रैक्ट भितरु जदि प्रिंसिपल डेटर निजे पेमेंट कर देला से रिलीज हे जिवो जदि क्रेडिटर मानिया लागि नाय आ श्योरिटी रो किछि दरकार नै मो विश्वास करछि देन भी हे जिवो एजा होछि कोन लॉजिकल पॉइंट गुडा को खाली सेक्शन नंबर दे चली को हम एसोसिएट करी पड़छ however in the following circumstances the liability of the surety is not considered to be discharged एडा होछि इंपोर्टेंट केबे हले 10 टा पॉइंट थिबो जोडा लॉजिकल थिबो ताडू 2 टा पॉइंट जोडा पूरा एक्सेप्शनल केस माने पूरा हटके थिबो सेडा रो क्वेश्चन आसी पारे First thing होची where a contract to give time to the
principal debtor is made by the creditor within a third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged. से कौन कौन देखो, when a contract to give time to the principal debtor, कागो principal debtor को माने creditor अच्छी, principal debtor अच्छी, surety अच्छी, हेले creditor principal debtor को कौन दोची, time दोची, माने extra time दोची payment करे पे, भल से पूछो, time दबा पे payment करे पे time दोची, is made by the creditor with a third person and not with the principal debtor. ए टाइम टा जो दोची सेटा प्रिंसिपल डेटर पेमेंट करिया दोची, बट काउ दो जानछ ना टाइम टू थर्ड पार्टी, माने एडा रिलेटिव हेइथिबो, रिलेटिव किंबा कोन एजेंट हेइथिबो, रिलेटिव किंबा एजेंट हेइथिबो जे कि प्रिंसिपल डेटर को रिलेट हेगी अछंती, प्रिंसिपल डेटर को जेतु रिलेट हेगी अछंती से लोक से कोन प्रिंसिपल डेटर सहित आ कथा हेइ पारलानी, बिजर हेला, से लास्ट कोन कला से थर्ड पर्सन को टाइम देला कि यार तू प्रिंसिपल डेटर पे पेमेंट करे ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड भितरे, तो ए केस रे श्योरिटी रो कॉन्ट्रैक्ट ता सीमित आगा थिबो, डिस्चार्ज हबो, बुझिलो, वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट आ एट लेखो। श्योरिटी रो केस ता व्हेन creditor gives additional time, एमती लेखो दीटा पॉइंट कवर हबो जिंद, when creditor gives additional time to principal debtor, principal debtor, आज जो additional time टा यदि gives directly to principal debtor, gives to a third party जे की may be a relative of principal debtor, हैला रफली लिखुची, जल्दी जल्दी लिखो, given directly to principal debtor gives to a third party, ए केस रे surety's liability is discharged, surety's liability is discharged, but ए केस रे कौन होची, surety's liability is not considered to be discharged, surety's liability is not considered to be discharged. Clear? Very important point है ना. When creditor gives additional time to principal debtor, से time टा directly दिया होची, directly दिया ले surety रो liability discharge हे होची, जदि third party के दोचंदी surety रो liability discharge हेनी. Last point देखो, mere forbearance or on the part of the creditor to sue the principal debtor or to enforce the other remedy against him does not, in the absence of any provision in the guarantee to the contrary, discharge surety. माने से जदि कहियो खाली खाली तने डरे दोथियो कि मु तो ऊपर केस कर दे, ताको जतले राग लेला मन पडिला से कहि दोछि मु केस कर दी, mere forbearance किमा mere suing जहा भी enforce कर दी remedially कहि डर होछि, तो से जिंस को धरी कोन surety रो liability discharge हेलाली कहि परियन, बुझिला ना, से कहछ कोन mere forbearance on the part of the creditor to sue the principal debtor, creditor कौन करछि sue करियो कहछि principal debtor to, or to enforce the other remedy against him, जहा कुछ भी other remedies available अछि से जिंस enforce कर देबे कहछि, does not, in the absence of any provision in the guarantee to contrary, discharge the surety. माने mere forbearance के merely से डरेले को जिंस surety discharge हो जाई परिबो, हैला फर्स्ट पॉइंट आगे टिके इंपोर्टेंट, ठीक अछि. नेक्स्ट क्लास रे हम देखिया कोन राइट्स ऑफ द surety, invalid guarantee, co surety and the other topics, ठीक अछि. Thank you. Like, share and subscribe.